नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का दिन पूरे देश में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट काउंटिंग चल रहा है उसका चर्चा आज पूरा देश में चल रहा है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि बहुत हिमाचल इलेक्शन के बाद कहिए, लेकिन आज जिस तरह से काउंटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी रुझान में सुबह से ही आगे बढ़ रहा है और 130 प्लस में आगे कांग्रेस है और अराउंड 70, 71, 69 इसके आसपास बीजेपी है और जेडीएस जो है 20 प्लस में है। और ये मैं आप सबको यह बता दूं कि जो एग्जिट पोल आया था, अलग अलग मीडिया हाउस का एग्जिट पोल आया था, उस सब एग्जिट पोल का ऑफ कोर्स सबका करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 3-4 आउट ऑफ 10 to 15 एग्जिट पोल्स, 3-4 एग्जिट पोल्स का आसपास जो नंबर एक्सपेक्टेड था वही रिजल्ट आज सामने आया। मैं आपको ये बता दूं कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन से पहले कर्नाटक असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट का बहुत बड़ा मायने रखता है और भारतीय जनता पार्टी जिसका पहला सरकार कर्नाटक में था और वो सरकार आज ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी लूज करने जा रहा है और राहुल गांधी जी का हिमाचल इलेक्शन जीतने के बाद फिर से साउथ में कर्नाटक को जीतना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जीत है और कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, और जिस तरह से आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने पूरा देश में, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं लोगों को समस्याओं को लेके सामने आ रहा हूं, मैं देश को बांटने नहीं दूंगा, ऐसे राहुल गांधी कहते थे। गांव गांव उन्होंने घूमा है, कर्नाटक में उनकी यात्रा में बहुत सारा रेस्पॉन्स मिला था, लेकिन आज हमने देखा ये भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है, उनको एक बहुत बड़ा झटका कर्नाटक की जनता ने दिया है और ऐसे लगता है कि जैसे दिस वोटिंग was not in favor of Congress, but it was a negative vote against Bharatiya Janata Party. And I also want to tell you that despite Prime Minister Narendra Modi's road show, Home Minister Amit Shah's road show, and massive crowds were there, despite that, Congress has a landslide victory in Karnataka Assembly elections. Friends, Uday India is doing a live debate on Karnataka Assembly election results. We have with us many friends from Karnataka. We have a Kastur Basuki ji. You are welcome. Kastur Basuki ji is a senior journalist. He was in different English news media from Bangalore. Kastur ji, आपको I welcome you from Uday India Digital Media. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. And thanks for joining, Basuki ji. Thank you, sir. We have with us Anubhav Poddar ji. I want to introduce Anubhav Poddar. Is a thinker, he is a political analyst, and he is also a industrialist. Anubhav ji, you are welcome for joining Uday India Digital Media for this live debate. Thank you, Deepak ji. We have with us Mr. Umesh Sethi from Gulbarga, Karnataka. I welcome you, Umesh Sethi ji, to Uday India Digital Media. His voice is not coming. Umesh ji, your voice is not coming. हाँ, yes. सभी को मेरे ओर से प्रणाम. Yeah,
I want to tell that Mr. Umesh Sethi is a great social worker, and he is really a social worker at the grassroots level who visits from morning to evening in all the areas, and he has got a good idea about what the people were really have an opinion about the current BJP government and how Congress has really winning Karnataka Assembly elections. We have Mr. Nihar Samantray from Bangalore. Nihar Babu, I welcome you to the digital media of Uday India. Thank you. Nihar ji, are you getting my voice? Yes. I want to tell our viewers that Nihar ji is an established industrialist in Bangalore, and he is of course from Odisha, but he is a good established businessman in Bangalore, and he has got good political understanding because since last 20 years Nihar ji is involved in many socio-cultural activities that is happening in Bangalore. We have with us Mr. Vasraj Madgaji. He is Uday India correspondent in Gulbarga, Karnataka. Vasraj ji, I welcome you to the Uday India media. प्रणाम दीपक जी। आज So, जो इलेक्शन की रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, I will come to you, Vasraj ji. I will come to you. ओके सर, ओके। First, I must ask my journalist friend, Mr. Kastur Basuki ji. Basuki ji, you are a very senior journalist covering the political activities of Karnataka from Bangalore since last 2 decades. And you have seen that this BJP government faced a really bad loss, and despite Narendra Modi's road show and everything, Congress is getting a thumping majority. What may be the reasons? What is your opinion? Thank you, Deepak ji. Basically, what has happened is the image of the state government, BJP government, has dented very badly because of 3 issues. One is corruption, price rise, and maladministration. These are the 3 major issues. The government is not able to tackle all these issues. The 44% of votes, it is unheard, in the history of Karnataka politics, in Yeah, the there is a modern day difference of politics. 8%, almost 8% 8% vote more. margin. And basically, what has happened is, Deepak ji, if BJP loses Karnataka, there is no BJP in the south. Okay. That's a very critical point that I wanted to make. The other Yeah. one is basically it is a warning, bells, for, for the BJP for the 2024 Lok Sabha elections. It's very Yeah. difficult. They have to pull up their socks, and it is basically what has happened is there is no leadership in the party. It is only they're entirely depending on Prime Minister and Home Minister, the party president. All these people Yeah. started coming here. Only they started talking about the central schemes, but they have failed to impress upon the people on the state government's achievements. It's a major failure. It's very difficult that way. But Basuki, you alleged that there is a huge allegation of corruption against the government, but as such, officially there is no case, or there is no such corruption cases came into limelight in the media till now in Karnataka. No. There are many cases. Lokayukta has taken that one MLA's house was raided. So many crores was recovered. There are so many corruption charges. 3 people died. Committed suicide. All these things are there. Let us not forget about all these things. It is there. Okay. It is already there. And then somewhere, the BJP government did not bother to address some of these issues.
So the failure of this government has led to, the Congress, basically Bharat Jodo Yatra, and the very hard campaign by both Siddaramaiah and DK Shivakumar and others, which has given this result. And Okay. it is expected. Many surveys have projected. Basically, one website, edina.com, it was 1 year back, 3 months back, they have predicted this. They did a wonderful survey, EEDINA, edina.com, and they projected more than, exactly 140 seats, and 44% to Congress. And Yeah. they said 62 seats But for the BJP. Vasuji, do you feel that the caste factor, that Lingayat factor and other caste, because all caste people, they have voted for Congress. Deepak ji, I can tell you very honestly what has People from happened all is community. the seat, Gopaliga, Lingayat and OBCs and the area where BJP has got a good ground, there also Congress has got good number of votes. absolutely what you said is right, Deepak ji. This is the polarization of other communities, Vokkaligas, Kurubas, Lingayats, and en masse Muslims. En masse they have voted for the Congress party. That is Okay, very, Basuji, just a minute. Basuji, we have with us our editor-in-chief, Mr. Prakash Nanda, who is also a senior political analyst. Prakash ji, Basuji says that, there was a huge anti-establishment factor. There are allegations of corruption and the people from all caste and community voted for Congress. How do you see this, his analysis? Prakash ji. Yeah. I agree with what Mr. Basuki said. Ultimately, any election, for that matter, the perception plays a very important role. You asked Very about him the instances of corruption. I really do not know whether these corruption charges are genuine or not, but somehow or other, the government, I mean here the BJP, could not remove that impression or remove that perception among a large number of people in Karnataka that this government was very corrupt. And particularly they Yes. say that in the last 1.5 years and after Mr. Yediyurappa left, this thing happened. So perception is very important in any election. And when perception comes, then all these matters, whether you have how much developmental work you have done, how much welfareism you have promoted, these things pale into insignificance a bit. And I am quite sure that this result also would have been worse, but for Prime Minister Modi and his electioneering in the last 10-15 days before the polls. If Exactly. this thing was not there, I would not have been surprised if the BJP tally would have come below 50. And another important point that Vasuki said, that BJP was a very divided house. If my memory serves me right, I think always Karnataka has seen a triangular contest. BJP, Congress and the JDS. And what has invariably happened in the last 4 or 5 elections, if one dispassionately looks at the situation, then somehow or the other in every election, BJP emerges as the largest number one in a party or the largest party. The only exception was in 2013. And that time everybody knows there are 3 BJPs contesting against one another. Because Mr. Yediyurappa had gone out, the Reddy brothers had, and that was the situation when Congress got comfortable in the majority. Suppose there has been a united BJP, the situation never would have been the same. So the very fact that in this election, Congress has got more than 140,
that means something, that the BJP that we see today is in the government was really highly a divided house. And everybody, the perception was that when the central leadership comes and interferes in your day-to-day activity, they decide everything. They do not promote a regional satrap. You see, the whole point is this: any big, large, party, the successful parties that you have seen, or better, even BJP also has seen in recent years, is that they usually do well when they have a very powerful regional satrap. Like they did well last time in Uttar Pradesh because Yogi Adityanath had some base. They did well in Assam because Hemanta Sharma has got some base. Unfortunately, in Karnataka, after removing Yadurappa because of their internal bickerings, and everybody knows it is a common secret that who was behind him and how the central leadership tried to interfere, BJP did not have or does not have a regional satrap for that sort of having perception. So, and also they also lost in Himachal Pradesh. They lost in Himachal also. Basuji, Prakash is telling that Yadurappa factor was a big factor. Correct. Big factor. No, Himachal Pradesh is a very small state. I'm talking of the real large states. And for your information, Himachal Pradesh, the election, it's a good question. People do not realize the total number of voters gap. In Himachal, it is not 44%. It was only 36,000 votes. Not many people know. Okay. Congress in Himachal Pradesh all totally got only 36,000 more votes than the BJP, and they came to the government. So Himachal Pradesh and Karnataka are not exactly situation when you can't equate. But one small point I like to make, and there I disagree with him, our distinguished guest from Bangalore. That is very warning signal. I really tend to disagree on this point, because just imagine what the situation was in 2019. And before that, 6 or 7 months before, also state assembly elections were held. BJP did not form the government in Karnataka. They lost in Rajasthan. They lost in Madhya Pradesh. They lost in Chhattisgarh. Within 6 months, parliament elections were held and BJP swept. So I think the Indians have realized now the Indian voters have become very mature. They know how to distinguish between what is local election, what is state election, and what is national election. And that does not mean, I'm quite sure, I have talked to many people. They said that they definitely will be voting against BJP, but let parliament elections come, they all will be voting for Modi. They are not talking of BJP there. That's a different thing, whether BJP is equated with Modi or not. But I think Modi is bigger than BJP. Perception, again, I'm talking of perception, plays a very important role. So in that sense, it is, I think, will be premature to say that it will have a directly negative impact on the national elections in 2024. You cannot say that. It is too premature at this very moment. But yes, Kasturiji is right. If you learn adequate lessons, if you stop your internal bickerings, you give the regional leaders little freedom of hand, things can improve. Thank you. I only said that. Yeah. Can I continue? Go ahead. No, Yeah, I only said, looking at the BJP's position today, I only said it's a warning bell. I didn't say that it's going to happen. I only said they have to fight unitedly, because in this election, all these issues they have taken, Bajrang Bali, Tipu, hijab did not, Hindutva did not work. So they should have some developmental work. It is very much essential for the party, political party, under the leadership of Prime Minister Modi, to take it for the next election. That is what I said. What I meant is that. No, but Basuji, tell our viewers whether the minus Yadurappa and
it creates a big difference of at the grassroots leader, and because this Lingayat community, they also this time voted for Congress. Whether the region, one of the region may be because of Yudhirappa, what Prakash ji said, and he said also that the Modi factor could not work in the local level because of the corruption or other factors. But in 2024, again Modi factor will work as was happened before 2019. How do you agree with that? No. Basically, what I think is, the all other, we are only talking about Lingayats. What about Kurubas? What about Dalits? What about left in the Dalits? What about right in the Dalits? What about Muslims? We have thoroughly ignored them. These communities have been ignored. So I feel the polarization and all these communities, they have come together. If you analyze the voting pattern, they went against BJP, including, because of the seat, allocation of candidates. The BJP has also erred. They have removed around 40 or 30 sitting MLAs. That is the thing, we are paying a price for that. So I feel these are the corrections they have to make. All these issues are no more an issue. The communities have come together to vote against the party. This is the message. Bottom line is that we have to be very, we have to look into these aspects. And Basukaji, what about, do you also feel that Sir, Bommai, Chief Minister, his face as a Chief Minister? Deepakji, Nihar here. Niyarji, tell me. I'm coming to you. Here. I agree with him, the previous speaker, because regional plays a big role. And that is in the state election. And national election, BJP plays a big role because they do good job. And I have experienced, particularly the regional people, they take the biggest advantage. It is not caste, creed, or other things. The regional leaders play a very important role, particularly Shiva Kumar, if I name it. He is the undisputed leader in the Congress. And that नहीं हुआ. नहीं. Bommai as a CM face because Bommai जी reject कर दे. रिजेक्ट किया, लेकिन क्या रीजन है मैं एक बताता आपको. बोलिए. क्योंकि I have known him personally because he came to, we do a big gathering, 20,000 people in a particular day. He came there as a chief guest and promised something which he never fulfilled. And that is the reason I think he is not where all he has fulfilled the promise. No, that is not the issue, sir. I'm very sorry to say. The issue is give the promise. No, those are not the issue. Whether he has a big people, no, that is not the issue. Issues are different. We are mixing up things. I don't think that is the issue. Issues are entirely different. He became so unpopular. Why has he become so unpopular? Can we discuss on that, please? Yeah. So let us first ask Mr. Anubhav Poddar. Anubhavji, Vasukaji is telling what is the reason that these leaders were unpopular, why this much of large gap of vote percentage between Congress and BJP. What is the major thing? What may be the reasons? You are a thinker, you are a businessman, and you are also a political analyst. Anubhav ji, आप बताइए, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं. Namaskar, Deepak ji. Namaskar, all the eminent panelists. Thank you. Frankly speaking, जो वासुकी जी ने बोला, जो नंदा जी बोल रहे थे, more or less I agree to what they have said. मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आज किसी भी स्टेट की गवर्नेंस के ऊपर में आपका मंत्रिमंडल होता है, उसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, लेकिन जो जनता होती है, the first point of contact is with the corporation, with the corporator. और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेंगलोर के लिए.
बैंगलोर में बीबीएमपी नाम की थी, आपके कॉर्पोरेटर आपको मिलता ही नहीं था। तो जो डिस्ट्रेस थी, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में डिस्ट्रेस थी, वो रेडिएट कर गई आपके एमएलए के ऊपर में। एमपी तक आप आदमी पहुंचा नहीं, वो चली गई एमएलए के ऊपर में। और जहां वो डिस्ट्रेस आपका कॉर्पोरेटर आपकी इम्यूनिटी नहीं बन पा रहा है, भाई बीजेपी की majority थी बीबीएमपी में, but if your corporator is not either able to perform or he is not able to respond, or if he is responding in a very insensitive manner, then that distress gets transferred to your MLA, और exactly बीजेपी के साथ यही हुआ है। The first layer of your immunity गायब हो चुकी थी, massive anti incumbency फेस की है बीजेपी के एमएलए ने। और उसको मैं आपको इतना बता सकता हूँ दीपक जी, मैं आज बेंगलोर में रह रहा हूँ 29 वर्ष से, मैंने कभी भी कांग्रेस को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं देखा। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके पास कोई भी अपने प्रो बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। भाई आज बेल पे उठे हुए आपके कुमार स्वामी जी और सिद्धरामैया जी के बीच में पड़ती नहीं है। कांग्रेस खुद के बीच में फैक्शन है। राहुल गांधी अपनी पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए सोकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनका कोई भी योगदान नहीं यहाँ पे। लेकिन हमारे खुद के पार्टी माने बीजेपी के अंदर में जो एंटी इनकम्बेंसी बनी, बिकॉज इनसेंसिटिविटी, और मैं ये वर्ड वापस यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि करप्शन जो होता है वो लार्जली इशू नहीं बनता है, क्योंकि एक परसेप्शन होता है कि आदमी करप्ट है कि नहीं है, आपने प्रूव किया नहीं किया, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जब आदमी में डिस्ट्रेस होता है और जब वो हैंड रीच आउट करता है हेल्प के लिए और उसको इनसेंसिटिविटी मिलती है, माने असंवेदनशीलता मिलती है, तो उसमें वो एक टोटल क्रोध भर जाता है। और वही इलेक्ट्रेट में हुआ हमारा। मैं आपको बता सकता हूँ 73.5% की वोटिंग हुई है यहाँ पे, और लोग बोलते थे कि यहाँ पे हंग असेंबली आएगी, मैं हंसता था। कभी भी नहीं होता है कि ऑल टाइम हाई वोटिंग के ऊपर में आपके ऊपर मैंडेट नहीं आए। 100% आपको मैंडेट आई है, और इसमें प्रो कांग्रेस ने सिर्फ इतना किया कि अपने आप को जो उनको लगा, उनकी मैनेजमेंट ये थी, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के अंदर में वाइड स्प्रेड ये था कि रेस मिनिस्टरशिप था, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। देखिए एक ही मंच पे आकर दोनों ने हाथ उठाया, कभी कॉफी पी रहे थे, कभी किसी रेस्टोरेंट में दिखते थे। उन्होंने गेम को वहां पर परसेप्शन का बैटल को जीत गया। सेकंड चीज उन्होंने बहुत अच्छे से की, उन्होंने बोला अपने सेंट्रल लीडरशिप को कि आप नेशनल इश्यूज को यहाँ पे रेस मत कीजिए। राहुल गांधी जब अपने पहले यहाँ पे इलेक्शन रैली के लिए आए थे तो उन्होंने अडानी का इशू रेस किया था। मेरे को न्यूज है कि उनके लोगों ने उनको कहा था कि ये गलती मत कीजिए, बीजेपी के ट्रैप में आ जाएंगे, क्योंकि मोदी और अमित शाह आपके साथ में नैरेटिव बनाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने अप्रिशिएट किया ये बात को, और अगली बात उन्होंने जो 5 पॉइंट्स की बात की थी कि हम आपको औरतों को फ्री बस पास देंगे या हम इतना इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो सच था झूठ नहीं था। उन्होंने उस बात पे अपने इलेक्शन कैंपेन को रखा। कांग्रेस की बहुत सारी माने बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बता सकता हूँ कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली है, कर्नाटक इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को गैल्वेनाइज किया, अपने गेम को सेट किया, और बीजेपी को अलाउ किया अपने आप को डिफीट करने के लिए। मैं आपको बता सकता हूँ, आई विल कंक्लूड वन थिंग, येडियुरप्पा जी को हटाना, जिस तरीके से उनको हटाया गया और उनके एवज में बोम्मई जी को लाया गया, उसी दिन बीजेपी बैकफुट पे चली जा चुकी। Correct. ये नहीं होना था। Agree. Deepak ji, I have one more session. I have to go. If you permit me, thank you. So last, Basuki ji, I have last questions for you. Please. मोदी फैक्टर क्या 2024 में काम करेगा? एंड सेकेंडली, क्या अभी जो अनुभव जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने सचमुच के इतना स्ट्रैटेजिक वे में पॉलिटिक्स में जो गेम किया है, वो दोनों सिद्धारमैया और डी शिव कुमार साथ में बैठे और राहुल गांधी का रैली किया, इकट्ठी किया, बहुत सारा, जिस इलेक्शन का समय में जिस तरह से वीडियोज कांग्रेस ने रिलीज किया था, आपने देखा होगा, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आपने देखा एचडी कुमारस्वामी को एक कांग्रेस का अननोन पॉलिटिशियन मोर देन 40,000 वोट में हराया, आर अशोकन हराए, और सीटी रवि बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी वो हार गए। तो इसके बावजूद क्या, कैसे देख रहे हैं आप इसको?
No, I sincerely feel that the issues that what they have taken has affected them. Basically, Siti Ravi only talking about hijab. He's the one who raised Tipu Sultan. They created, two characters which they are, no more there in the entire political history of Karnataka. All these things have went against the political party. If you see Dr. Sudhakar, one of the Yeah. major faces Health of minister, health minister, he is defeated. So can you take it this way? So people are basically frustrated and fed up with the policies. As he तो rightly said, बासुकी जी, आप ये कहना चाहते हो कि बीएसवाई ने सुधाकर जी को कांग्रेस से बीजेपी में लाया and he was virtually behaving like a deputy chief minister in Karnataka government. absolutely, और absolutely. सुधाकर के साथ और बहुत सारे लोग थे जिनके नाम पे एलिगेशंस भी था। उस समय तो corruption सरकार charges, correct. बच गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक फैक्टर है इनको हराने के लिए, ये आप मानते हैं? Sir, that is what I said. We have to be very careful. BJP as a political party, the people of Karnataka respect both the Prime Minister and the Home Minister so well. You should see how people have gathered and other things, but it did not turn into votes. I sincerely feel that's why I said we have to pull up our socks, getting ready. बासुकी जी, एक चीज ये भी पिछले 3-4 दिनों में नेशनल मीडिया में ये भी लोगों ने, सीनियर कॉलमिस्ट ने लिखा है कि ओके, एक्सेप्टेड दैट करप्शन हुआ है, ये गलतियां हुई है, लेकिन कर्नाटक एज ए स्टेट हैज गॉट ए गुड ग्रोथ इंडेक्स इन कंपेयर, मतलब यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पर कैपिटल इनकम or Correct. health sector or education sector. You see the schemes of central government in every sector. The state is perfectly was doing well. If as an economist one can see कि corruption is not a big issue. No, not sense. Corruption. I said price rise. Price rise is an issue that very well capitalized by the Congress. Congress used always. If you go to any village, they will say, why should I pay 1,200 rupees for a gas cylinder? Why? They don't want any reasoning. So these are the questions. See, Vaasuki ji, if price rise is an issue factor, then why Congress lose Assam? Sir, Assam is different and Karnataka is entirely different. I don't think we should compare Assam and Karnataka. Last questions, Vaasuki ji, last questions you tell yes. me. Modi has done so much of road shows and there was a huge crowd and you see there was huge show. Yeah. Why Modi factor could not work? And if it works, so whether Modi has added 30 more seats, agar Modi nahi hote to it would be limited within 30 to 40 seats. Do you feel so? You're right, Deepak ji. Whatever happened, it is because of these two leaders. You see so many number of seats, at least 65, 62, whatever it is. Otherwise, I don't think BJP would have crossed 40. Sir, Nihar here. Okay. Sir, Nihar here. So, Vaasuki ji, you can... Yeah, please. Thank you very much. Thank you all the panelists. Thank you for joining Uday India. Namaskar. नमस्कार। निहार बाबू, हम आपके पास आएंगे, उसके पहले मैं हमारे साथ वो उमेश सेठी जी गुलबर्गा से जुड़े हुए हैं। उमेश सेठी जी बहुत पॉपुलर सोशल वर्कर है, सुबह से शाम तक वो सिर्फ जनता का सेवा करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, शमशान भूमि में जाते हैं, पॉलिटिशियंस में भी मिलते हैं, हर पार्टी के पॉलिटिशियन से मिलते हैं, आम जनता से भी उनका कनेक्ट है। उनका जितना कनेक्ट जनता से है, इतना डिस्कनेक्ट आज की बीजेपी के नेताओं से है। तो उमेश जी, आप बताइए, ये बीजेपी को इतना बड़ा धक्का कैसे लगा, क्यों लगा? आप लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको क्या फीलिंग है, बताइए। यू आर ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आप बताइए। उमेश जी, अपना माइक ठीक करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, सभी पैनलिस्ट को प्रणाम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेट टू कर्नाटक के 6 करोड़ मतदारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को डेमोक्रेसी का मौका दिया है।
अगेन क्या होता, अगर कोई पार्टी हंग असेंबली हो गई तो अगेन इट विल बिकम रिसोर्ट इश्यूज. सो आई एम वेरी Yeah. प्राउड ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका. सो Yeah, एंटी practical इनकम्बेंसी model से है। ज्यादा, एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा जो बीजेपी आज हार गई है. आज अपने कर्नाटका देश में, जैसा देश हमारा इंडिया विविधता में एकता है, कर्नाटक भी वही चीज में हम इधर पालते हैं, विविधता में एकता, सभी सेकुलरिज्म है. उसके अलावा जो मोदी के नाम पे ये लोग लीडर लोग आज जो काम करना नहीं चाह रहे थे, खाली मोदी का जो तजुर्बा लेके ये लोग काम करना चाह रहे थे. मोदी का थोड़ा तो भी ये लीडर लोग, हम भी लोगों में 10 से 20 घंटा अगर काम करे होते तो आज ये नौबत नहीं आता था. ये लोग खाली जो मोदी के परिचय के जीत के आको 7-8 साल में कांग्रेस 70 साल में क्या करे बोलकर ये 9 साल में एंटी इनकमेंसी हो गया. जी, तो आप ये कह रहे हो कि जो से BJP ज्यादा के ये नेता लोग, हैं कर्नाटक में, ये लोग उनका जमीन से अभी जो कोई कस्तूर connect जी नहीं था। कहे और उमेश जी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। निहार जी आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते थे इस विषय को लेके? No, as Umesh ji said, because the tall leaders are not there in the Karnataka. And if Tall leaders they in would which have party? followed Which party? BJP, yes. Because people have lost a faith, and I agree that at least Karnataka people have given the majority to one particular party, and it may not be hung assembly, but I'm sure Yeah. it will be run very soon. And I know particularly Basavraj and Shivkumar both. Shivkumar is a man of words, whereas Basavraj is not man of words. So that is what they have lost faith in the BJP, because that's why you can see that reduce of the seats for BJP. And this is what I comment. And I have many factors to share, but I will निहार जी share. हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप एक बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट से, आईटी इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं। बैंगलोर में आप पिछले 30 साल से बैंगलोर की मिट्टी को, पानी को, जमीन को आप अच्छे से पहचानते हैं, बैंगलोर के लोगों को पहचानते हैं। इसे इट हैज बिकम ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी नाउ। आप ऑनेस्टली बताइए, क्या बीजेपी गवर्नमेंट का पॉलिसीज इट वाज good for industrialization, infrastructure development, business development, investment scenario or not? Yes, it is definitely yes. And if that is yes, I say, and I must say, what is the negative part on that? They promise a lot of things, they don't fulfill it. That is what is the about price rise of essential things. No. Price rise is nothing. And the Karnataka people are very simple. They are honest, and they don't get into the politics very fast. And there are some good politicians, and whatever they say, they keep it. And Karnataka people believe on the truth, believe on the trust, believe on the transparency. Okay. Anubhav ji, coming to you. Whatever we have discussed till now we could see that dropping Yediyurappa in the mid of the process was one factor that many people were they were annoyed, not only from Lingayath community, and people from other communities also were loving Yediyurappa, and that may be one of the reason. Second reason, what we have discussed with our panelists, that the chief minister face, Mr. Bommai, was not that popular, and he is not also associated with grassroots level worker, and that is also one reason. Third reason was that there were few leaders in the government, or in the there were few ministers or people's representatives against whom some corruption cases were also allegedly involved.
And next point was, this is first time that in the state of Karnataka, after long time, that the Congress party become very much well organized. They could fine tune very good political strategies, and in social media also, and taking the inputs from the public, as one of our the participants said, that they Congress focused on the regional issues more than the national issues, because if you will discuss about national issues, then Narendra Modi will be more popular. So these are the things. Sorry, but Anubhavji, you tell our viewers why BJP in power but could not have a united house? Why BJP could not find out a good political strategy? Whether it was a failure of leadership of central leadership, or it is just because of the anti-establishment factor, and whether it will have impact on 2024 Lok Sabha elections. Deepak Deepak ji, can I take lead now? Yeah, please. Deepak ji, Yeah, thank you you. can. Thank you all. Thank sir. you for joining. Thank you for joining, Niyar Babu. Okay, Deepak ji, I can tell you with so much certainty that there is no single point responsible for the defeat of the BJP. There's a combination of factors. Now, let me tell you the history before this election came in. In Karnataka, in the last 50 years, no state government has been repeated. No chief minister has completed his term. And there is a very, very, very strange phenomena to this. Whichever government is voted to power, that party loses the next general election. This is also the trend which is continuing in Karnataka for a very long time. But, all these bellwethers are sometimes broken. माने ये हमेशा के लिए तो होता नहीं है, कभी ना कभी टूटता है. जैसे तमिलनाडु में गवर्नमेंट रिपीट हो गई, पंजाब में गवर्नमेंट रिपीट हो गई, ये होते नहीं थे, लेकिन हुए हैं. हुआ क्या है कि पहले तो I can only tell you I am living in Karnataka for a very long time. The Karnataka people are very proud. You cannot try to bulldoze or browbeat or hoodwink them. If you try to push them beyond a point, they will not take it. And charismatic leader like Mr. Yedurappa, who, on foot, on cycle, used to go door to door and build the party, and he has led you to a victory. You have removed him midway. It was like Mr. Virendra Patil being removed by Mr. Rajiv Gandhi. Actually, by removing him, you have sent down the same signal to the electorate and your voter base. Forget the people who did not vote for you. They were never with you. But the people who voted with you, it was a very, very big blow. And it is very evident right now. You see in the Mumbai-Karnataka region where the Lingayat vote aapke yahan se khiski hai, it is only because of Mr. Yedurappa. They are feeling humiliated and insulted. And Congress could see the chink in the armor and it bulldozed it and reached out to all the mud politics. Congress भी सीख गई. उसका opening तो हमारे ही गलती की वजह से उनको मिला है. That was one thing to negate a popular leader. And BJP realized, see, we must understand that the central leadership of BJP quickly realized the mistake and they drafted Mr. Yedurappa to the parliamentary board, try to show that, he has been elevated and try to reconcile their mistake. But it was too late. The public in Karnataka was convinced that, he's been humiliated and he's been sidelined. Yeah. We are thinking on various issues, whether it is debates or whether it is public meetings. He was not in the forefront, neither, or परिवारवाद बोल के उनके next generation को भी sideline करने की कोशिश की. That has also backfired on the BJP. Now, whether परिवारवाद is right, nepotism is there, not there, that is for a larger debate for next time. Second thing what has happened over here is, we are talking about the Lingayat vote. The Lingayat vote in northern Karnataka, in that belt, is only 18%.
If you add the Brahmin vote, you add the Bania vote, you add the little other votes, that is also 32-33%. But that in entire state, if you just divide into two, rural and urban. So if you talk about rural, Congress created a rainbow coalition, Ahimda coalition, SC, ST, Dalit, OBC, Muslim and aspirational India, aspirational Karnataka. इसके अंदर में BJP lost the perception battle because, as I told you, there was a house which used to look divided. Congress played to the gallery and made the house look united. BJP started looking into factions, and the Hindu vote, which used to be Hindu and non-Hindu vote, Hindu vote started looking divided into caste. That is where the BJP fell into the trap. And the अनवर जी, आपने एक चीज मार्क किया, ये पहली बार हुआ कि बजरंग वाली के ऊपर बड़ा चर्चा हुआ और हमने उदय इंडिया में उसका टाइटल भी दिया था कि बजरंग वाली द सेवियर ऑफ कर्नाटक पॉलिटिक्स। लेकिन आज सुबह से आपने देखा होगा, पहले भी कांग्रेस ने पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो में लिखा कि जितना हनुमान मंदिर है उसका हमने रिपेयरिंग करना हो तो करेंगे और उसको और ज्यादा हनुमान मंदिर बनाएंगे। और जो कांग्रेस नॉर्मली ऐसे करता नहीं है, और आज जब से काउंटिंग शुरू हुआ, कर्नाटक की कांग्रेस ऑफिस के सामने एक कार्यकर्ता जो है हनुमान जी का मुखौटा पहन के गदा लेके वो बजरंगबली की जय करके बोलते थे। और यहाँ पर दिल्ली में भी कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता वहां आज बजरंगबली की जय कहते हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर इतना चेंज आया है, या ये लोग कर्नाटक में हनुमान जी पैदा हुए हैं इसलिए उनको फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस? देखिए दीपक जी, आपको इतना बता सकता हूं कि कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व को डिफेंसिव मोड पे रहती थी, उन्होंने जैसे ही देखा कि बीजेपी नैरेटिव चेंज करना चाह रही है, उनके नेता, स्पेशली डीके शिव कुमार की बात करता हूं, जिस दिन ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसी दिन डीके शिव कुमार हनुमान मंदिर में जाकर आरती करना, वहां पे धोख खाना, वहां पे हनुमान जी की गुणगान गाना, बोलना कि मैं हनुमान भक्त हूँ, उसको उन्होंने जड़ से ही पकड़ने की कोशिश की, उसको बड़ा बनने ही नहीं दिया। और हम एक गलती कर रहे हैं। देखिए आज हम जो आपका वोट बेस है, आपका वोट बेस है जो बीजेपी का फैन रहता है, उसकी ऑनेस्टी के लिए, उसकी लीडरशिप के लिए, उसके करिश्मा के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपकी जो डिस्ट्रेस लेवल थी, आपके कॉर्पोरेटर गायब था, आपकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, पावर की प्रॉब्लम थी, वाटर की प्रॉब्लम थी, रेन वाटर की प्रॉब्लम थी, भयंकर प्रॉब्लम थी सिविक एम्यूनिटीज की। उसको कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि ये सारा का सारा इनसेंसिटिविटीज हैं और बीजेपी कवर अप करना चाह रही है हनुमान को लाकर। तो एक्चुअली लोगों में गुस्सा बढ़ गया, स्पेशली यंगर जनरेशन में। ये बैकफायर कर गया बीजेपी के ऊपर में। ये नहीं करना था बीजेपी को, बट बीजेपी को मुझे लगता है कि जन्नत की हड्डी का समय। अनुभव जी, आपने ये भी देखा जो महाराष्ट्र कर्नाटका होता है, जिस एरिया उस एरियाज में भी, कोस्टल कर्नाटक में भी, और उधर मैसूर वाला रीजन में आप देखिए कांग्रेस हैज टेकन द वोट्स ऑफ जेडीएस आल्सो, एंड इन दैट एरियाज बीजेपी हैज फेस्ड रियली अ बैड फेज। देखिए दीपक जी, आज आप अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर में नियरली 7% वोट का लीड है। ये लास्ट टाइम कब हुआ था मुझे याद है, ऑलमोस्ट 8% वोट परसेंटेज है, 8% ह्यूज गैप। बीजेपी का सोशल, अगर बीजेपी के लिए कुछ पॉजिटिव अगर बोला जाए, ये बोला सकते हैं कि उनका जो सोशल कोएलिशन है वो अभी इंटैक्ट है। उनका 35-36% का वोट बेस है और उन्होंने सोशल अपने वोट को बढ़ाने की कोशिश की है, स्पेशली मैसूर के बेल्ट के अंदर में। वहां पे स्प्लिट वोट कर दिया है जेडीएस का, उससे सीधा कांग्रेस को फायदा हो गया। कांग्रेस ने स्प्लिट किया मैसूर के बेल्ट को। लेकिन हैदराबाद कर्नाटका बेल्ट, उसके अंदर में जो न्यूज मेरे पास है कि वहां पे जेडीएस ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया है। और इसमें जो मेरे पास न्यूज है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति वालों का इसमें गेम प्लान रहा है कि बोल के कि किसी न किसी तरह से बीजेपी को हराओ, और ये लीवरेजिंग हम बाद में यूज करेंगे, और अपना वोट को उन्होंने ट्रांसफर करा है कांग्रेस के लिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो मेरे पास न्यूज है, अनकन्फर्म न्यूज है, रिजल्ट के ऊपर में रिवर्स इंजीनियरिंग करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का वोट बेस ट्रांसफर होना ये नॉर्मल नहीं है। आई कैन ओनली टेल यू, कुमार स्वामी का बेटा फिर हार गया वहां पे, आपके स्टॉलवर्ड्स वहां पे हार गए हैं। आज वो थर्ड इलेक्शन हारा है,
पर ऐसा तो जी। नहीं है कि कुमार स्वामी चाहता था कि उसका बेटा हार जाए, वो तो पुरजोर कोशिश किए हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप सेंट्रल कर्नाटका देखिए, आप देखिए, आप माने आज आप हुबली कर्नाटका को देखिए, सब जगह आप हार रहे हैं। आपकी जो Yeah. स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है ध्वस्त हो रहे हैं। ओनली दारूवाड़ा थिंग हुबली दैट और सारा बेल्ट में हार गया। दारूवाड़ा में तो 6 में से 1 ही सीट जीता है असेंबली में। इनफैक्ट आपको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सिटी के अंदर में 28 सीट हैं। अगले बार बट पिछले बार बैंगलोर टाउन में बट बीजेपी अच्छा किया इन कंपेयर टू कांग्रेस बैंगलोर में शहर देखिए में। 28 सीट्स में से लास्ट जब मैंने चेक किया था तो 14 इंच था, तो वो भी हाँ। कोई कमी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने आकर यहाँ पे पुरजोर कोशिश की और उन्होंने कम से कम नहीं तो 3 से 4 सीट्स को स्विंग कर दिया है। लेकिन हाँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जब सिटी के अंदर में जाता था, मैं अलग अलग एरियाज में गया, मेरे को बीजेपी माने एक पुरजोर तरीके से, जो आरएसएस का एक काडर होता है, जो बीजेपी का काडर होता है, बजरंग दल का, दुर्गा भाई, एक जो काडर होता है, आपके फ्लैग्स होते हैं, आपके नुक्कड़ के स्पीचेस होते हैं, आपकी एक माहौल बनता है। मुझे बीजेपी उस तरह की लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ जो मोदी जी की रैली हुई उसके अंदर में वो टॉप अप वोट जो आया है, वो बीजेपी का फेस सेविंग कर दिया बेंगलोर में, ठीक है, वरना ठीक मैं है। बता सकता हूँ कि वो भी नहीं होता। ओके ओके, हमारे साथ कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, उनकी कंस्टिट्यूएंसी से गुलबर्गा से हमारे साथ वसराज माडगी साहब है। माडगी साहब, क्या आप हमको, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गुलबर्गा का क्या हालत है, कितना सीट कांग्रेस जीता और कितना बीजेपी जीता, और वहां की जनता का क्या रिएक्शन है? गुलबर्गा में तो 2 ही सीट बीजेपी जीता, बाकी का पूरा कांग्रेस ही जीत लिया है। जी। और बीदर में एक्चुअली कभी भी 6 सीट में एक बीजेपी आता था, 5 कांग्रेस आते थे। लेकिन ये बार ऐसा हुआ 4 बीजेपी आए, 2 कांग्रेस आए बीदर में। अच्छा वो खरगे का मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, खड़गे साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी से मतलब ज्यादा खरगे हुआ का है। नेटिव प्लेस बीदर डिस्ट्रिक्ट है। ओके, बीदर डिस्ट्रिक्ट है, यस। बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा गांव है, वो गांव का वहां से सेटल होके कर्नाटक गुलबर्गा में सेटल हो गया खरगे जी ने। जी। और आपको ये बताना बोले तो जो अमित शाह जी ने जो किए हैं, नया नया लोगों को हम लोग वोट देंगे, टिकट देंगे बोल के, जी। कुछ 74 क्या 72 नया फेस को टिकट दिए। उसमें 12 आदमी भी चुन के नहीं आए, शायद मेरे ख्याल से अच्छा 11 या 10 आदमी चुन के आए। और जी। बाकी के 50-55 लोग जो है ना, मार्जिन 500 हजार 800 हजार 800 हजार के अंदर ही हार गए। 100 लोग हैं बीजेपी के ही, जी। मार्जिन बिल्कुल मार्जिन लेवल में। जी। ये भी एक अमित शाह जी का जो उनका जो ये करना सोचे थे, वो यहाँ सक्सेस नहीं हो गया। जैसा गुजरात में किए, वो प्लान यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। और एक बात, BL संतोष जी ने, वो या सोशल मीडिया में आया या टीवी में आया, कुछ भी आया, हमको लिंगायत वोट नहीं चाहिए, हम हिंदुत्व के ऊपर लड़ेंगे बोल के बताए, वो पूरा सब तरफ जो वायरल हो गया। बाद में वो मीडिया से साइबर क्राइम से ये किए वो किए बोल के सब आया है। लेकिन आम जनता के ऊपर तो असर पड़ेगा थोड़ा लिंगायत के ऊपर, तो ये मेरा कहना है सर। जी जी। उमेश सेठी जी, दीपक। आप हमसे बात कर रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। अब हम हमको सुन पा रहे हैं? उमेश सेठी जी, अनम्यूट करिए अपना फोन को, माइक्रोफोन अनम्यूट करिए उमेश जी। अनम्यूट म्यूट। हाँ किया भैया। अब बोलिए, अब दीपक बोलिए भैया, हाँ। आज जो है ना, जो बीजेपी ने जो नया स्ट्रेटेजी किए हैं, कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग करेक्ट नहीं किए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा एक दूध में छोटा सा अगर कुछ ये हो गए तो पूरा माहौल खराब हो जाता, वैसे एक 2-3 कैंडिडेट्स को विदाउट स्क्रीनिंग, लाइक एग्जांपल मणिकंठ राठौड़ चिंचोड़ी, करेक्ट, he had a 40 criminal backgrounds and he got already big scams. So मैं कहने का मणिकंठ राठौड़ का गलती नहीं है, वी शुड सेलेक्ट, क्योंकि वो अपोजिशन वाले वही मुद्दा को सारे स्टेट को नो, एक आजकल पॉलिटिक्स में एक छोटा सा मुद्दा चाहिए लोगों में फैलाने के लिए, तो ये भी एक कमिटी है, कमी है। और उसके अलावा तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने जो लिंगायत नहीं चुन पाए, करप्ट जो
हाँ, और ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया, ऐसे आप सोचते हैं? हाँ, तो मतलब कहने का ये मैसेज रॉन्ग जाता है आम लोगों में, क्योंकि आजकल लोगों को क्या है, सेवा करने वाले एक अच्छे लीडर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जितना भी करप्शन करने दो, लोगों के जुड़ने वाला होना, लोग सेवा करने वाला होना मैं चाहता हूँ। और छोटा सा गलती क्या करे ये बीजेपी वाले, जब एक अपना स्टेट का येडियुरप्पा जी जो है, उनका थोड़ा स्कैटरिंग होता है, अपने लोगों में थोड़ा छवि चेंज हो गया। अरे अच्छे येडियुरप्पा का अभी उम्र था, वो थोड़ा भी उनका एक एंटी इनकमसी फैक्टर स्टार्ट हो गया, क्योंकि कर्नाटक में 19% ऑफ द लिंगायत कम्युनिटी है, वक्कलिगा 16% है। तो मैं कहने का मतलब नहीं, कास्ट का नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। जब वो कांग्रेस ने जो हर फील्ड में डिफेंस खेलते हैं, उन्होंने सक्सेस हो गया आज। देन वो ऐसा जिद नहीं पकड़े। एक जो अभी हनुमान जी का था, इमिडिएटली खड़गे साहब उसको चेंज करके डिफेंस, अभी पोद्दार साहब ने बोला है जी, उन्होंने ऑलवेज डिफेंस के ऊपर ही सक्सेस हो गया आज। इतना मेजोरिटी आना बोले तो दे हैव नॉट एरोगेंटली किसी मुद्दे को नहीं पकड़े, सेक्युलरिज्म के साथ डिफेंसली। जो कांग्रेस में बीजेपी में कमियां थे, और उनका ही लेसन उन्होंने पेज प्रमुख से, कांग्रेस भी उनके पास भी संगठन था कैसे काम करना, ये बीजेपी से सीखे उन्होंने, वही डिफेंस से इनको आज मेजोरिटी बता दिए। देखो ना, कहीं भी जय सिद्धरामैया जी हो, डी के शिव कुमार जी हो, कहीं भी एरोगेंटली कहीं पब्लिक के स्पीच में नहीं बोले उन्होंने। इवन प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी लीडर्स को देखो, माइक जब भी मिलता है उन्होंने डिफेंस के साथ लोगों के दिल में बसा है उन्होंने। और जो पिछड़ा हुआ है, गारंटी को जो दिए हैं, वो आराम से कर सकते हैं कर्नाटक में। क्यों बोले तो अपना कर्नाटक का सेकेंड इन लार्जेस्ट जीएसटी कलेक्शन में है। आज देखो जीएसटी कलेक्शन आफ्टर फर्स्ट सेट ये है तमिल, वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट कर्नाटक ही है। आराम से दे कैन मैनेज। बट मेनली मुद्दा जो है करप्शन, वो भी करप्शन कैसे बोले तो, ये जो ऑफिसर्स को हरेसमेंट देते थे ये लोग, कि ऑफिसर्स को अगर हरेसमेंट करे तो वो लोग कब चेंज कर सकते, ये आज का रिजल्ट है। ऑफिसर्स को कैसा हरेसमेंट करते थे, ट्रांसफर के लिए परसेंटेज, उनको रहने के लिए परसेंटेज, और डेली परसेंटेज। कैसा कैसे लीडर ऑफिसर्स बच सकता बोलिए? क्योंकि मैं भी 30 साल से लोगों से जुड़ा हूँ। नहीं, मैं एक ही मिनट, मैं भी 30 साल से लोगों से जुड़ा हूँ। ऑफिसर्स को डिफेंस के लिए अगर हम लीडर साथ में रहे तो कभी ये नौबत नहीं आता। तो मेरा कहने का, और मैंने जो देखा हूँ वो आज मैं आपके सामने रखा मैं हूँ। अपना दर्शकों को बता दूं, क्योंकि उमेश जी आज ये सोशल वर्कर, सुबह से रात तक वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ये उनका अपना अनुभव था, और ये जो उन्होंने बताया ये उनका अपना ओपिनियन था कि कैसे बीजेपी ने सही तरह से कैंडिडेट चयन नहीं किया, और बीजेपी के जितने नेता थे दे had no contact with the grassroots level. That is what he says. And at the same time, the Congress leaders were having a very cozy relationship, and very honestly they were requesting the public, and they were connecting with the public, and Congress could raise the regional issues more, not the national issues. And that may be the reason that people were people voted for Congress. And now Mr. Hemant Kumar, our senior journalist from Bangalore, joined. Hemantji, now we had 3-4 guests already have joined, and many people, many of our guests are telling that BJP could not find good candidates to fight the elections, and the BJP, there is a huge allegation of corruption cases against the BJP leaders, and there was a mistake of dethroning Yediyurappa as a chief minister, and of course the regional issues were there, including the price rise issue. Hemantji, how do you feel that? Because you are also covering the political issue of Karnataka since last more than 2 decades. Can you tell our viewers? Hemantji.
Okay. There may be some network issue. Hemant ji, are you listening me? ओके अनुभव जी पहले मैं आपसे आपके पास आता हूं। क्या आप ये मानेंगे कि कांग्रेस को जिस तरह से ग्रास रूट लेवल से लेके हर कास्ट और कम्युनिटी का लोगों ने वोट दिया एंड बीजेपी से इतना एक जंप में वोट परसेंटेज में इतने आगे चले गए हैं, क्या आपको ये लगता है ये जो कांग्रेस का स्ट्रेटेजी है, दिस विल वर्क इन अदर असेंबली इलेक्शंस एंड will it give a signal to whole southern states and whether this this दीपक जी नमस्कार। जो कांग्रेस का जो कैन यू हियर मी? हाँ, are you getting my voice, हेमंत जी? हाँ, I can hear you. You said is it a lesson to all southern states करके बोल रहे थे आप? Yeah, okay. Have you can you reply my questions I had asked you? नहीं, I couldn't hear the earlier questions. सिर्फ इतना ही सुना मैं कि सदर्न स्टेट्स के लिए क्या संदेश है क्या करके। नहीं, मैं आपको दोबारा पूछता हूँ। हमारे जितने सारे एमिनेंट पैनलिस्ट यहाँ पर थे, सब लोगों ने कहा कि बीजेपी अपना कैंडिडेट सही नहीं चुना और बीजेपी ने येडियुरप्पा जी को चीफ मिनिस्टर पद से हटा के गलती किया एंड बीजेपी की नेता और मंत्रियों के खिलाफ जो भी दीपक जी मैं बोलूं हाँ बोलिए दीपक जी मैं बोलूं। या प्लीज कैरी ऑन। आपको सुनाई दे रही है क्या मेरा आवाज? यस आवाज आ रही है क्या? प्लीज या प्लीज स्पीक, बोलिए दीपक जी। या आई एम लिसनिंग, प्लीज स्पीक। मुझे आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। हेमंत ने माताड़ी ऐसा है दीपक जी, ऐसा है बीजेपी का एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। पहला ब्लंडर ये है कि येडियुरप्पा को पद से हटाना जी 2.5 साल पहले 3 साल पहले नहीं हटाना था। ठीक है, नंबर 1 इस डेवलपमेंट के वजह से लिंगायत कम्युनिटी को आपने एक मैसेज भेजा है कि यू डोंट रेस्पेक्ट येडियुरप्पा करके। क्या कारण था निकलने के लिए? उम्र बढ़ गया, 75 के ऊपर 75 पार कर दिया। क्यों आपको मालूम नहीं था क्या कि 2019 में जब उनको मुख्यमंत्री बना तो उनको मालूम नहीं था क्या 1.5 साल के बाद वो 75 क्रॉस करेगा? तो ऐसा तो सरकार लाने के लिए येडियुरप्पा चाहिए, सरकार लाने के बाद येडियुरप्पा नहीं चाहिए आपको। ये नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में जैसे कैंडिडेट्स को बदलकर एंटी इनकम्बेंसी को नलिफाई करने के लिए आपने एक प्रयोग यहाँ पर प्रयास किया। They are tested it in Gujarat, but this could not succeed in कर्नाटका। नहीं, कर्नाटक में ऐसा नहीं हो सकता है दीपक जी, क्योंकि सिचुएशन इन गुजरात इज डिफरेंट फ्रॉम सिचुएशन इन कर्नाटका। ओके, गुजरात में क्या है, संगठन अच्छा है, मजबूत है और नेतृत्व भी बहुत मजबूत है। कर्नाटक में ऐसा नहीं है। कर्नाटक में सिर्फ 3-4 ऐसा जिला है जहां पर जो भी कैंडिडेट हो वो जिता के ला सकता है। ऐसा एक 3-4 डिस्ट्रिक्ट है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। 1991 में लोकसभा में मंगलुरु क्षेत्र से धनंजय कुमार जीतकर आया था। वो जैन समुदाय के मतलब एक सज्जन था, एक नेता था। जैन का परसेंटेज कितना वोट है? 2% है। लेकिन संगठन की वजह से, संगठन की मजबूती की वजह से धनंजय कुमार जीत कर आया। उसके बाद सदानंद गौड़ा जीत कर आया। उसके बाद अभी नलिन कुमार कटील जीत कर आए हैं। तो संगठन अगर मजबूत है, संगठन मजबूत है तो आप कैंडिडेट को बदल सकता है। यहाँ पर ने क्या किया, 52 कैंडिडेट्स को बदल दिया। दीपक जी, हमेशा क्या होता है चुनाव में, ट्राइड अनटेस्टेड। उसको किसी को ट्राई करना था, किसी को टेस्ट करना था। वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड कैंडिडेट्स को अगर खड़ा करते हैं तो वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड को जानते हैं। ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड।
देखो हेमंत जीतने जी, के लिए क्या क्या करनी है वो सब करेंगे। हेमंत जी, अब नया हेमंत जी, लोगों को लेके आ गया, नया नेतृत्व पैदा करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। नया नेतृत्व अगर पार्टी में नया नेतृत्व पैदा करनी है तो संगठन में कम करने के लिए बोलो ना, लोगों के सामने जाओ, जनता के बीच में रहो, लड़ो, सरकार के खिलाफ लड़ो, सरकार की हेमंत जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? ऐसा एक जनता के बीच में काम करते करते आप एक लीडर बन सकता है। चुनाव में कंटेस्ट करके लीडर नहीं बन सकता है। ये प्रयोग नहीं करना था बीजेपी ने गलती किया। नंबर 2 गलती, ये सेकंड नंबर 1 ने येडियुरप्पा को हटा दिया। नंबर 2 ये ऐसे किया, एक्सपेरिमेंट किया नया कैंडिडेट को लाके। नंबर 3 ये रिजर्वेशन का मुद्दा जो है, लिंगायत को रिजर्वेशन देना नहीं देना, कितना देना, इसके बारे में बहुत ही देरी कर दिया और नाराजगी इतना बढ़ गई थी समुदाय में, लिंगायत समुदाय में। खास तौर पर वो पंचमसाली लिंगायत करके है, हुबली, धारवाड़, गदग, बेलगाम, बीजापुर, बागलकोट, ये सब डिस्ट्रिक्ट में पंचमसाली लिंगायत और डोमिनेंट। आप उसको उस समुदाय को अपने विश्वास में नहीं लिया, आपने डिले कर दिया कुछ देने के लिए, मतलब देना नहीं देना, कैसे देना, तो विश्वास पर नहीं लिया। तो ये तीसरा कारण है। These are the 3 main reasons for BJP to suffer हेमंत जी, defeat. मुझे ये बताइए, लेकिन इसके साथ साथ दीपक जी, मैं और एक 10-15 सेकंड लेता हूं मैं आपसे। इसके साथ साथ सुन सकते हैं क्या? आर यू हियरिंग मी? कैन यू हियर मी? यस, दीपक जी, या आई एम लिसनिंग, दीपक जी, प्लीज कैरी ऑन, हेलो, कैरी ऑन प्लीज, हेलो, प्लीज कैरी ऑन। दीपक जी, कैन यू हियर मी? यस, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಮಂತ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. अनुभव जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो, Yes, yes, I'm getting your voice. या ये हेमंत जी अभी बता रहे थे दीपक जी, 4 पॉइंट। कैन यू हियर मी? हाँ, यस, बोलिए, आई कांट हियर यू। आप बोलिए। आप बोलिए। ओके, ओके, सो आपने देखा है, हमारा व्यूअर्स ने, कि अभी तक हमारा जितना गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और जो जुड़े थे और चली गए हैं, सब लोग की एक ही बात कहना था कि बीजेपी हैज परफॉर्म वेरी वेल ऑन Hello? नेशनल इश्यूज दीपक जी, इन द यस, I don't think he is able to connect. There may be some network issue. Yeah. So in Karnataka, there is good infrastructure development, road in primary sector, education sector, healthcare sector, but somehow the issues of corruption has engulfed the BJP. ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ಟಿವಿ and the Congress has very strategically this time fought the election, and Congress could able to unite the 2 leaders, D. Subkumar and the other Congress leader, and Rahul Gandhi on his Bharat Jodo Yatra also could meet the people and listen the common man's problem. And that may be the reason, because the people's representative from BJP, the MLAs of BJP, the MPs of BJP, the ministers of BJP, the allegation is that they were not meeting the common man. The common man were not able to have contact with them. There is the huge disconnect, and that may be one reason. And second, they were thinking that the M factor, that the Modi factor, because of the Modi factor, they will win the election, but it didn't happen. And many political analysts and many political pundits are of the opinion that because of Modi,
more than 20 to 25 seats could added to the bag of BJP in assembly elections of Karnataka. So that is the reason, but we are again waiting for the final results, and we are waiting to see who in which area, in which belt, or in which community has voted to whom, and what is the difference of opinions, and who are the senior leaders who won the elections, who are the senior leaders who lose the elections, and what may be the reason BJP could get such big setback in assembly elections. That's all for now. Again, very soon we will join on this debate with our more prominent guests. I will again thanks our esteemed guest, Anubhavji. Thank you for joining Uday India Digital. Umesh Sethi, I will thank you for joining Uday India Digital. Madgi Saab, thanks for joining Uday India Digital. Again, after some time, we will be starting another debate, and we will be discussing analyzing the Karnataka Assembly election issue, and we will give you more details. What are the causes that BJP got such huge setbacks? That's all for now. Stay tuned with India. Okay, sir.